Assalamu alaikum, and today we will cover a very important topic in linguistics, which is basic concepts and theories in linguistics. So as you know that PPSC lectureship exam is for job and job for teaching, so you must know the pedagogy and methods of teaching language. For example, there are totally 8 methods in ELT, English teaching language, and the first method is GTM, grammar translation method. Second is direct method, and third is the audiolingual method. Fourth is the silent way, and the fifth is Suggestivepedia, and sixth is community language hearing, and seventh is total physical response, and while eighth is communicative language teaching. So we are going to read them one by one. So first method is GTM, like grammar translation method, which is a kind of gram method. The grammar translation method is a method of teaching a foreign language derived from the classical method of teaching Greek and Latin. So these are two MCQs. First MCQs is that it is the teaching of a foreign language, and the second MCQ is that this method is originated from Greek and Latin methods. In these classes, students learn grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between the target language and the native language. As we witness in India and Pakistan, where we just cram tenses, rules of grammar, and prepositions, and we just want to fit these rules and fit these preposition in the given sentence of the target language. So this is a kind of cram method. In the second method of direct method, which is a natural method of teaching foreign language, and it refrains from using the learner's native language and uses only the target language, means we just reach on the target language directly. So it was established in Germany and France around 1900, like 19th century, and contrast with the GTM method. So ये दोनों जो methods हैं, these both are in contrast with each other. There are few characteristics of direct method. For example, the focus is on speaking the language, like on a centrality of spoken language, and we just teach the concepts and vocabulary. Okay, so the following techniques that are used in direct method are question answer exercise, dictation, reading out loudly, student self corrections, and conversation practice and paragraph writing. So these are few characteristics of that. अगर MCQs में options में ये वाली characteristics पूछी गई हों तो obviously it is direct method, और ये MCQs point of view से ये पूरा chapter बहुत important है. Then we are moving towards audiolingual method like ALM, or this is also called army method or new key. So this is again important MCQs. The method of teaching foreign language is based on behaviorist theory, like ALM is based on behaviorist theory, which postulate that human can be trained through a system of reinforcement. So this was very similar to direct method, like students should be taught a language directly without using students native language to explain new words or grammar in their target language. लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, लाइक ALM और डायरेक्ट मेथड में, बिकॉज दिस मेथड डज नॉट फोकस ऑन टीचिंग vocabulary, while in direct method we more focus on teaching vocabulary. And as you know that behavioral psychology was developed by B.F. Skinner and was included in this method by Charles Fries. So in this method, skills are taught in the following order, like listening, speaking, reading, writing. LSRW, listening, speaking, reading, writing. So next we have our fourth and important method of silent way teaching style. The silent way of language teaching method was created by Caleb Gattagno, that makes extensive use of silence as a teaching method. Obviously it looks some kind of hilarious method, but it is important and it really works. Gattagno introduced this method in his 1963 book Teaching Foreign Languages in Schools, The Silent Way. So you have to remember the name of the book and the year of the book published, when it was published, and the name of the person who just coined the silent method, okay, silent way method. It is usually regarded as an alternative language teaching method. Silence is used as a tool to emphasize learners' autonomy and active students' participation. So pronunciation is seen as fundamental to the method. So this is again important MCQs. Like in the silent way method, we focus on pronunciation. Evaluation is carried out by observation, and teacher may never ever set a formal test. Okay, so इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें एवल्यूशन होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन, एंड मोर फोकस इज पुट ऑन प्रोनाउंसिएशन.
So we just call it the silent way method. The Suggestopedia method. The Suggestopedia is the teaching method developed by Bulgarian psychotherapist Georgy Lizanov in 1970s. So the theory applied positive suggestions in teaching and is nowadays called the suggestive learning. So this is very important MCQs, because when we put an older term in modern linguistics, it becomes very important terms for coming exams. So the method for adults includes long sessions without movement and materials that are appropriate for adults. So this is called the Suggestopedia method. Next we have community language learning. Community language learning, or CLL, is a language teaching method in which students work together to develop what aspects of a language they would like to learn. So this is very interesting. It is based on counseling approach in which the teacher acts as a counselor, mere counselor, okay, and the learner is seen as a client and collaborator. So the basic focus is on client or collaborator, which is learner himself, and the teacher is merely counselor or paraphraser. And next, total physical response, or TPR method. TPR is a language teaching method developed by James Usher. सो इन पर्सनस के नेम ज़रूर याद रखने हैं जिन्होंने ये डिफरेंट मेथड्स को कॉइन किया हुआ है. ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट. So this method is an example of the comprehension approach to language teaching. So these lines are very important because anything can be asked from these lines in exams. And our eighth and last method is CLT, Communicative Language Teaching. This approach of language is very important because teaching emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of study. So there are few important characteristics of this. Means the activities that are performed in classrooms in this method are role playing, interviews, information gap, games, language exchange, surveys, and learning by teaching and pair works. So these are few important activities under this method. So ये हमारा चैप्टर एंड हो गया है. अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, विच इज़ थियरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन लिंग्विस्टिक्स, एंड द फर्स्ट ऑथर इज़ नोम चॉम्स्की. इन्होंने डिफरेंट बुक्स को ऑथर किया है, डिफरेंट तरीके दिए हैं, डिफरेंट टर्म्स को कॉइन किया है, तो वो सब के सब स्टडी करने वाले हैं. हिज फुल नेम वॉज एवरम नोम चॉम्स्की and he was an American linguist, philosopher, cognitive scientist, historian, logician, and social critic and political activist. So Noam Chomsky is described as the father of modern linguistics. यहाँ पे ना कन्फ्यूजन आती है कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कौन है और फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कौन है. एक याद रख लें, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज़ सॉशर and the father of modern linguistics is Chomsky. So he is also a major figure in analytic philosophy and one of the founders of the fields of cognitive science. So he gave the linguistic theory which is called UG or Universal Grammar, Transformational Generative Grammar or MP, like Minimalist program. Terms invented by Chomsky are colorless green ideas leave furiously. अब ये सेंटेंस देखें तो ये सेंटेंस अगर हम ग्रामर से देखें, सेंटेंस के लिहाज से देखें, कोई टेंसेस, कोई वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं बनती है. इट इज़ अ नॉन सेंसिकल. सिंटैक्टिकली ये रॉन्ग है, ठीक है. सिमेंटिकली ये ठीक है, लेकिन सिंटैक्टिकली ये रॉन्ग है. चॉम्स्की ने एक हायरार्की भी पेश की जिसको कहते हैं UCCR. लाइक देयर आर 4 स्टेप्स, 0, 1, 2, 3, एंड 0 पे हम अनरेस्ट्रिक्टेड को रखते हैं, 1 पे हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को रखते हैं, एंड सेकंड पे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री को रखते हैं, एंड थर्ड पे हम रेगुलर को लिखते हैं, ठीक है. सो चॉम्स्की ने ये 1956 में एक हायरार्की पेश की थी जो कि फॉर्मल ग्रामर्स से रिलेटेड है. अब जिस तरह से मैंने बताया कि टाइप 0 ग्रामर में रखते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को, इसमें हम कौन सी ग्रामर पढ़ते हैं? ऑल फॉर्मल ग्रामर्स, मतलब कोई भी हो जाएं, दिस इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर मेथड. फिर टाइप 1 में वी स्टडी द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, एंड इन टाइप 2 वी स्टडी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड इन टाइप 3 वी इंक्लूड द रेगुलर लैंग्वेज. 0, 1, 2, 3 UCCR. Then there is a term, what is digital infinity? Digital infinity is the idea that all human languages follow a simple logical principle according to which a limited set of digits, irreducible atomic sound elements are combined to produce
एन इनफाइनाइट रेंज ऑफ पोटेंशियली मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस, ठीक है. एंड देन देयर इज़ what is internal language and what is external language. So in 1986, Chomsky proposed a distinction between I language and E language, like internal language and external language. These both concepts are similar but don't identical to the competence and performance distinction. Okay. So then we have formal grammar. What is formal grammar? In this method, we study zero type of grammar, which is unrestricted grammar. And then generative grammar. Generative grammar का concept बहुत important है. चॉम्स्की को लेके एक linguistic theory है that considers that grammar to be a system of rules that is intended to generate exactly those combinations of words which form grammatical sentences in a given language. दैन मिनिमलिस्ट अप्रोच MP क्या होता है? ये मिनिमलिस्ट अप्रोच को हम स्टडी करते हैं अंडर जनरेटिव ग्रामर मेथड के ही, ठीक है. इन लिंग्विस्टिक्स द मिनिमलिस्ट प्रोग्राम इज़ अ मेजर लाइन ऑफ इंक्वायरी दैट हैज़ बीन डेवलपिंग इनसाइड जनरेटिव ग्रामर सिंस 1990s. एंड व्हाट इज़ प्लेटोज प्रॉब्लम? ये भी चॉम्स्की की ही क्वाइंट की हुई टर्म है. एंड इट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ वी कैन नो सो मच. इतना ज़्यादा नॉलेज, लाइक रिचनेस ऑफ नॉलेज हम किस तरह से एब्सॉर्ब कर सकते हैं माइंड में. देन स्कैंशन क्या होता है? स्कैंशन और अ सिस्टम ऑफ स्कैंशन इज़ द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द मीट्रिकल करेक्टर ऑफ अ लाइन ऑफ वर्स. तो ये होती है स्कैंशन. So we have just ended second chapter. Now this is the turn of third chapter, which is second language acquisition or SLA. What is the concept of SLA? तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में बहुत ही बड़ा एक मेजर कॉन्सेप्ट है SLA का. ये एक पैराग्राफ पे मुश्तमिल एक चैप्टर है जिसमें SLA का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि व्हाट इज़ SLA. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग बोथ आर इट्स नेम्स and it is a sub-discipline of applied linguistics. So the language that learner already know can have significant influence on the process of learning a new language. So this influence is known as language transfer. So this is a term under SLA. SLA can be affected by individual factors such as age, learning, and strategies and affective factors. So these are few important things about SLA. Then we are moving towards new criticism chapters. And the first author is I.A. Richards, whose full name is आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड. जिस तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, इसी तरह आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स है और इसका पेन नेम है रिची. इसको भी याद रख लें. और इसका न्यू क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा नाम है. इसने किताब लिखी है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, मतलब का मतलब, मायने का मीनिंग क्या है. एंड ही इज़ द पायनियर इन न्यू क्रिटिसिज्म. और इसके वर्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक इसने और किताब लिखी है सेमेंटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. एक और इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. एंड अनदर वन इज़ द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक एंड विच प्रूव टू बी फाउंडिंग इन्फ्लुएंस फॉर द न्यू क्रिटिसिज्म एज वेल. उसके अलावा इसने किताब लिखी इन द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स और टाइम्स ऑफ इंडिया गाइड टू द बेसिक इंग्लिश एंड द जनरल बेसिक इंग्लिश डिक्शनरी. ये सारी की सारी इसकी डिफरेंट बुक्स हैं. इनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है. और जो चीज़ कॉमन है इसकी बुक्स में वो है क्रिटिसिज्म का वर्ड. तो इस वजह से इसको आसानी से याद रखा जा सकता है कि I.A. रिचर्ड्स ने न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर काम किया है. जब हम I.A. रिचर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें एक ऑगडन नामी शख्स है जो कि लिंग्विस्ट है. उसका भी नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑगडन ने एसोसिएट किया था I.A. रिचर्ड्स को, promoted its use in schools of China. Ogden allowed only 18 verbs which he called operators. वो उनको ना वर्ब्स को ऑपरेटर बोलते हैं और वो कहता है कि देयर इज़ नो वर्ब इन बेसिक इंग्लिश. ठीक है. तो अभी हम ऑगडन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि ऑगडन रोट इन द सिस्टम ऑफ बेसिक इंग्लिश बट द वर्ड नीड्स मोस्ट इज़ अबाउट 1000 मोर डेड लैंग्वेज एंड 1 मोर अलाइव. तो ये ना बड़ी फंटास्टिक किस्म की कुछ लाइन्स हैं जो इसके बारे में अहम हैं, पेपर में पूछी जा सकती हैं कि किसने अटर की हैं. अकॉर्डिंग टू ऑगडन, a realistic general core vocabulary could contain 2000 words. The core 850 words plus 200 international words plus 1000 words for the general fields of trade, economics and science. यानी कि कुछ jargons ले लेते हैं, कुछ basic words 850 हो गए
और कुछ इंटरनेशनल वर्ड्स को ले लिया जो कि 200। तो इतने वर्ड्स का होना एक अच्छी विकेबलरी के लिए बहुत ज़रूरी है और आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। द 4 kinds of meanings are introduced by Richards: sense, tone, intention and feeling. STIF, stiff, okay? STIF, stiff, sense, tone, intention and feeling. So ये कुछ चीज़ें हैं और ऑर्गन के बारे में इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स IA रिचर्ड्स के, जो कि 7 वर्क्स हैं। इनमें से 3-4 याद रखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम स्टडी करेंगे विमसेट को, WK विमसेट, और इसको याद रखने के लिए इसके वर्क्स को और इसकी जो मेजर थ्योरी या कॉन्सेप्ट इसने दिया है उसको याद रखने के लिए यू कैन कॉल हिम विमसेट फैलेसी, बिकॉज इसने 2 किस्म की फैलेसीज दी हैं। एक है इंटेंशनल फैलेसी जो कि इसने ब्रेडस्ले के साथ मिलकर दी है, और एक है इफेक्टिव फैलेसी जो कि इसने अगेन ब्रेडस्ले के साथ मिलकर दी है, यानी कि इफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी। अब इंटेंशनल फैलेसी को वो कहता है फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है, और इफेक्टिव फैलेसी को वो बोलता है इमोशनली फैलेसी या इमोशनल फैलेसी। अब दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो तकरीबन उसने 1954 में ही दे दिए थे इन हिज ऐसे वर्बल आइकन। इंटेंशनल फैलेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स ओरिजिन्स। अब इसमें होता क्या है कि जो राइटर है या क्रिटिक वो पुट करता है टू मच एम्फोसिस ऑन पर्सनल, बायोग्राफिकल, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन पे, कि वो जो एनालिसिस ऑफ वर्क है ना वो कहीं खो जाता है। जो रियल जो वर्क है, मतलब आप ऑटोबायोग्राफी पे, बायोग्राफिकल एलिमेंट्स पे और उसकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इतना खो जाते हैं कि जो एक पोइम है या वर्क है वो अपनी हैसियत खो देता है। तो ये होती है इंटेंशनल फैलेसी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द सीवनी रिव्यू। फिर जो अफेक्टिव या इमोशनल फैलेसी है, इट अपीयर्ड इन विमसेट एंड ब्रेडस्लेट द वर्बल आइकन इन 1954, and they defined affective fallacy as the error of evaluating a poem by its effects, especially its emotional effects। मतलब इमोशनल इफेक्ट्स की वजह से एक पोइम को आप रॉन्ग वे में एवेलुएट करते हैं एंड इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फैलेसी, दिस पोएम itself as an object of specifically critical judgment tends to disappear, so that criticism ends in impressionism and relativism। so fallacy को वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि fallacy means mistake in thinking that keeps us away from real understanding, यानी कि आप इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं गलत तरीके से या किसी और एंगल से कि वो जो रियल इंटरप्रेशन होती है वो कहीं गुम हो जाती है। सो अब हमारा क्रिटिसिज्म का चैप्टर एंड हुआ है, तो हम देख लेते हैं कुछ वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की शॉर्ट क्लासिफिकेशन। वॉल्स को मोनोफ्थोंग्स में और डिफ्थोंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यू नो देयर आर ओनली 8 डिफ्थोंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द वॉल्स आर कॉल्ड मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स में आ जाते हैं शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स, यानी कि SS 7 शॉर्ट एंड FL 5 लॉन्ग। तो ये आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से इसमें आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अबव में जो शिवा का एक सिंबल आ रहा है वो शेप, इसमें हेड, हैड, पट, गॉड, बट। तो इनमें जो जो आ रहे हैं ना मोनोसिलेबिक, वो हैं सारे मोनोफ्थोंग्स। फिर लॉन्ग वॉवल्स में जैसा से फार्म, शीप, कर्व, सॉ, यू, ये सारे लॉन्ग वॉवल्स हैं एंड दे आर ओनली 5। फिर हमारे पास आते हैं G8, ठीक है। वो G8 ऑर्गेनाइजेशन भी है ना इंटरनेशनली, तो आपने G8 से इसको याद रखना है। इनके ग्लाइडिंग वॉवल्स और डिफ्थोंग्स आर ओनली 8, जो कि टेक, बाय, बॉय, फियर, केयर, गो, पुअर, काउ, ये इनमें जो आ रहे हैं ना ये सारे डिफ्थोंग्स हैं। एंड देन वी हैव 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। यू कैन रीड फ्रॉम देयर ये कौन कौन से साउंड्स हैं और किस किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। इस पर हम अलहदा से एक लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे जिसमें सिर्फ वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स की किस तरह से मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Then a new chapter is there, research method in English. So there are few research method। जिस तरह से यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बच्चों को लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर के डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च करने को दी जाती है, एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है, तो उस टाइम पे जब हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ रिसर्च और रिसर्च कितने टाइप्स की होती है और करना क्या है, बेसिकली मेथडोलॉजी क्या होगी, टारगेट हम कौन सा रखेंगे रिसर्च के लिए, मेथड कौन सा यूज़ करेंगे और क्वेश्चनर किस तरह से बनाएंगे, कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और रिज़ल्ट किस तरह से निकालेंगे, तो ये हमें पता नहीं होता उस लेवल पे। तो प्रोजेक्ट बनाना एक बहुत ही हिरक्लियन टास्क लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है।
सो आई विल टेल यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ओवर हियर। और हमारा मकसद क्योंकि लिंग्विस्टिक में रिसर्च को पढ़ना है लिंग्विस्टिक्स में, तो लिंग्विस्टिक्स रिसर्च पे ही बात करेंगे आज। रिसर्च में सबसे पहला स्टेप तो होता है कि आप एक प्रॉब्लम निकालते हैं जिस पे आपने रिसर्च करना होता है और उसको सॉर्ट आउट करना होता है। Then you go for literature review, you go thousands of books, not thousand but a few books, and then you specify the purpose of your research. You just have just of idea in your mind कि अब आपको करना क्या है research में, and then you determine specific research questions like questionnaire, and then specification of a conceptual framework. आप एक framework बनाते हैं कि how to do certain things in a certain way, and then there is a choice of methodology कि आप कौन सा मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं रिसर्च का। देन डाटा कलेक्शन, एक्चुअल जो रिसर्च आता है स्टेप पे, 7th स्टेप पे आता है कि यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम इंटरनेट बेसिकली, एंड यू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा, and there is reporting and evaluating research and communicating the research findings and possibly the recommendations or results. This is the last step in research. So we are moving towards the linguistics research now. लिंग्विस्टिक्स रिसर्च में डिफरेंट जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें से भी किसी पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ सकता है, या फिर किसी न किसी टॉपिक पे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी के, मॉर्फोलॉजी के, लिंग्विस्टिक्स के एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के, लाइक देयर आर सो मैनी टॉपिक्स ओवर यू हैव टू रिसर्च। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स रिसर्च में आते हैं वो सारे। तो इसमें टाइप्स कौन कौन सी आती हैं लिंग्विस्टिक्स रिसर्च में? पहली है जी क्लासरूम बेस्ड रिसर्च, then cognitive linguistics, then corpus linguistics, then discourse analysis and learner autonomy prosody, and psycholinguistics, second language acquisition, SLA we have already read, social linguistics and stylistics. तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनका समझाना ज़रूरी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहली डेफिनेशन है हमारे पास कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। अ कॉर्पस इज़ अ प्रिंसिपल्ड कलेक्शन ऑफ machine readable authentic spoken or written text. Corpus studies attempt to identify patterns of language such as lexicon किस तरह से यूज़ करना है, ग्रामर किस तरह से यूज़ करनी है, डिस्कोर्स को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है इन अ रेलिवेंट कॉर्पस और कार्पोरा। ठीक है, सो दीज पैटर्न्स आर रेलिवेंट टू अ वेराइटी ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस इन बोथ लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। और उसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं, लाइक उसमें फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, स्टाइलिस्टिक्स और वो सारी की सारी जो भी लिंग्विस्टिक्स के अंडर आती हैं, उन सब की डेफिनेशंस का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट मैगज़ीन्स को। एक था एडनबर्ग रिव्यू मैगज़ीन, एक क्वार्टरली रिव्यू मैगज़ीन एंड एक ब्लैकवुड मैगज़ीन। तो ये सारे के सारे डिफरेंट मैगज़ीन्स थे जो कि 19th सेंचुरी में इनोग्रेट किए गए और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुए। मतलब जिस तरह से एडनबर्ग रिव्यू है तो इसने प्रमोट किया था रोमांटिसिज्म को और विग्स पॉलिटिक्स को, WHIGS विग्स पॉलिटिक्स को। और इसको स्टार्ट किसने किया था? फ्रांसिस जेफरे ने, सिडने स्मिथ, हेनरी ब्रॉगम एंड फ्रांसिस हॉर्नर ने। इसी तरह क्वार्टरली रिव्यू की बात करें थी 1967 तक रहा, एंड इट इज़ अ पोलिटिकल पीरियोडिकल फाउंडेशन which was started in March 1809 by well-known London publishing house John Murray. इसके बारे में इतना ही याद रखना ज़रूरी है, जस्ट एक MCQ से रिलेटेड। तो ब्लैकवुड मैगज़ीन जो है ये ब्रिटिश में शाया हुआ था until 1980s, and it was originally called Edinburgh's Monthly Magazine. So this is something important for these. Next is what is the Chartist movement or Chartism. So to extend the political sides of the working class, William Lovett drafted the People's Charter in 1838 as a heart of radical campaign for parliamentary reform, and after the Reform Act of 1832. So the Chartist 6 demands कौन कौन सी थी? एक तो ये कि मेन को राइट टू वोट दिया जाए इक्वल। अब देखिए हम 1838 की बात कर रहे हैं, तो तब ऐसा नहीं था कि हर शख्स को वोट देने का हक हो। तो तब दीज वर दी नीड्स ऑफ द आर। वोट्स फॉर ऑल मैन, लाइक विमेन को भी, वेन को भी इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाएँ। एबोलिशन ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बी प्रॉपर्टी ओनर्स, पेमेंट फॉर MPs एंड एनुअल जनरल इलेक्शंस एंड द सीक्रेट बैलेट। तो ये क्या पता चल रहा है इससे? ये एक किस्म की पॉलिटिकल साइड प्रोवाइड कर रही थी ये मूवमेंट चार्टिज्म। फिर बाइबल को MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के MCQs आते हैं। जॉन विक्लिफ वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द लैटिन वर्जन ऑफ बाइबल विच वाज आल्सो कॉल्ड वल्गेट बाइबल, और ये 1382 में थी। देन इन द अर्ली 16th सेंचुरी विलियम टेंडेल केम विद द ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। इसने किसका ट्रांसलेशन किया था? न्यू टेस्टामेंट का, बिकॉज बाइबल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ना, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट।
Old Testament, before birth of Lord Christ, the saints and priests gave several preachings and that were collected as Old Testament. And New Testament को फिर कहते हैं the preachings given by Lord Christ is called New Testament. इसमें 27 books हैं in the New Testament, ठीक है. Originally all the 27 books of New Testament were written in Hebrew language and later translated in a special form of Greek known as Koine. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ MCQs हैं बाइबल के बारे में. और 1539 में ग्रेट बाइबल के टाइटल से एक बुक अपीयर होती है और क्रैमर्स बाइबल के नाम से भी और कोवरडेल बाइबल के नाम से भी, जो कि माइल्स कोवरडेल ने लिखी थी. अब देख लेते हैं रिफॉर्म एक्ट को, जो कि 1832 में, इसका ईयर ऑफ पासिंग दिस एक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. 1832 में ये पास हुआ एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और ग्रेट रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 या फिर रिफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 1832 या फिर फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट. तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं. इसमें इस रिफॉर्म एक्ट की सबसे बड़ी बात क्या है कि स्लेवरी वाज रिमूव्ड अंडर दिस एक्ट. इट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स ग्रे एंड द एक्ट ग्रांटेड seats in the House of Commons to large cities and the act increased the electorate from 5 lakh to 8 lakh 13,000, which allowed about 1/5 adults male to vote from total population. So there are few reformations under this act.